Hello everyone, welcome back again. So in this video I'm going to tell you about the communication, the objectives of communication as well as the process of communication. So in the earlier video I have elaborated or given an overview regarding the BCA syllabus. So we are continuing with the unit first, and the name of the unit first is communication. So just let's start. We are doing, first of all we will learn the origin and meaning of the communication, right? First of all, it is very much important to know the meaning of communication, to understand the meaning of the communication. So we will start with its origin. So the word communication is derived from the Latin word communicare, which means sharing or exchanging information. So this information is very important to write the introductory note of the question, what is communication, right? So the origin is from the Latin word communicare, and the Latin word communicare itself means sharing or exchanging information. So the word communication is all about imparting or sharing knowledge, information, or any kind of the message, right? So we can say that communication is the act of conveying meanings from one entity or group to another through the various mediums of communication. Like आप ऐसे समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जिसमें आप एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, कोई भी मैसेज आप क्या करते हैं, इम्पार्ट करते हैं, राइट? तो यही मतलब बताया गया कि जिसमें एक एंटिटी, चाहे वो इंडिविजुअल हो या वो ग्रुप में हो, वो दूसरे ग्रुप को या दूसरे इंडिविजुअल को बहुत सारे मीडियाज ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करके कोई भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज को ट्रांसफर करता है, तो वो कम्युनिकेशन कहलाया जाता है। मान लीजिए आपने किसी को फोन करके आपने उसे इंफॉर्मेशन दी, तो वो आपने एक मीडिया यूज करा। कौन सा मीडिया यूज करा? ओरल मीडिया यूज करा, ठीक है? तो ओरल मीडिया में आपका कौन सा डिवाइस यूज हुआ? आपने मोबाइल फोन से कॉल किया, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन है, जिसमें कोई भी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो दिस इज द origin as well as the meaning of communication. Hope it is clear to you. Now we will see the introduction of communication. We will be understanding more about the communication. So the very first point is that often communication gets confused with conversation. Majority of the people get confused that communication and conversation is the same thing, right? But the communication word is more formal. The communication has the more responsibility. Why we are saying that if I am communicating with you all, so it is the responsible part, right? So we can say that communication, in the part of the communication we follow various kinds of rule. While if you are talking about the conversation, it is conversation is lighter than the communication. Conversation is just for the fun. लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है, और इसमें हमें बहुत सारे की फैक्ट्स को फॉलो करना पड़ता है, जिससे हमारा कम्युनिकेशन और ज़्यादा बेहतर हो और ज़्यादा इफेक्टिव हो। लेकिन कॉन्वर्सेशन की बात करें तो कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल होता है। हालांकि कम्युनिकेशन भी इनफॉर्मल होता है, लेकिन वो हमेशा कॉन्वर्सेशन से उसकी कैटेगरी ज्यादा ब्रॉड होती है, राइट? सो इन द सेकेंड पॉइंट इट इज सेइंग दैट टू आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट. Definitely communication and conversation both are two different things, right? The third point is explaining more about that the conversation is full of pleasantries, right? Conversation is all about fun. Conversation is all about having very good time or very light kind of information in which we do not bother about the rules and regulation. Here it is written that conversation is devoid of any useful information. We are not going to impart
very important information in the way of conversation, right? If I have some very important information to share with you all or to share with anybody, so I will be using the mode of communication where the proper information imparted by me to the recipient in a correctful manner, right? So my information, whatever I am delivering to the other person, it should be accurate, it should be correct, as well as it should be truthful in nature, right? Third point, communication is a two-way affair, aims at passing on or receiving a specific piece of information. This is the another important point regarding the communication, that communication is always be a two-way affair. Why we are saying two-way affair? Because there will be one sender and the other one will be the receiver. तो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो हमेशा टू वे होगा, और जो उसका एम होगा, उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा, इट विल बी जस्ट passing on as well as receiving a specific piece of information, right? तो कहने का मतलब यह है कि सेंडर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है, सेंडर ने रिसीवर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई, तो ये रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेंडर को फीडबैक जरूर दे। अगर ऐसा होता है तो ही आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि कम्युनिकेशन इज अ टू वे अफेयर where the sender send the information and receiver gives feedback to the sender that he understand the information or not, right? So do remember that communication is a two-way affair, right? Moving to the next slide, that is objectives of communication. Why we are learning communication? What is the importance of communication? What are the main objectives of communication? So the very first objective is information, right? We all are surrounded by a lot of information in this era, so we have to give information, we have to receive information, so we are doing this kind we are sharing or receiving the information, so by which thing? So we are receiving through the medium of communication. So the communication objective is to give or receive information. Clear? Second is advice, right? Advice is also the part of the communication. Means objective means कि हम communication की मदद से क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो obviously we share information, we receive information, information के आदान प्रदान के लिए भी communication use होता है। दूसरा एडवाइस, राइट? अगर हमें किसी को एडवाइस देनी है, किसी से एडवाइस लेनी है, तो भी हम कम्युनिकेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज ऑर्डर, राइट? वी आर गिविंग ऑर्डर, वी आर इम्प्लीमेंटिंग ऑर्डर, गवर्नमेंट्स ऑर्डर्स देती हैं, सभी लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसका बैकबोन क्या है? इसका बैकबोन है कम्युनिकेशन। Next point is persuasion, right? Persuasion means to influence, means come with the help of the communication. If you are the master of the communication, if you know the art of the communication, you can persuade the other people, you can influence the other people with your way of communicating, right? You can influence the other people by the tactics of communication if you know that. तो आप किसी को भी अपनी कम्युनिकेशन की कला से प्रभावित कर सकते हैं, तो वो भी क्या है? एक ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन। एजुकेशन इज द very important objective of communication. All the education, each and everything is surrounded by communication, right? We are imparting education, we are receiving education just by the means of communication, right? As well as warning, किसी को दिशा निर्देश देना, वार्न करना, तो हम किसका यूज करते हैं? बहुत सारा कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन की मीडियाज का यूज करते हैं, चाहे वो ओरल हो या रिटन हो। तो वार्निंग को देने के लिए भी यूज किया जाता है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब मेजरमेंट करना, आकलन करना, राइट? तो हम कम्युनिकेशन की हेल्प से
किसी भी चीज को इवेल्युएट कर सकते हैं। इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं? अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज का इवेल्युएशन करना है कि ये चीज सही है या गलत, तो हम उसमें बहुत सारा डिस्कशन करते हैं, लॉजिक्स देते हैं, लॉजिक्स लेते हैं, सुनते हैं, अपनी बात को रखते हैं। तो इवैल्यूएशन की प्रोसेस भी काफी लंबी चौड़ी है। तो उस इवैल्यूएशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने में जो हमारी मदद करता है वो क्या है? कम्युनिकेशन करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट वीडियो में अपना प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और उसके इम्पोर्टेंस और हो सके तो स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन भी करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि काफी लंबा हो जाता है। ओके, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।